Very good morning, dear friends. Myself, Dr. Vikrant Sudhakar Paekar. I am working as assistant professor in Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawahar Palghar. Welcome on the topic chemical calculation. In the last session, we have seen the introductory part regarding the concept of expressing the concentration. In that, we have tried to understand what is meant by basically the term solution, and in which we have seen that a solution is nothing but the homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substance. The example, basically the solution contains two parts. One is solute, which is present in smaller quantity, while solvent is one which is used in the larger quantity. The example may be the sodium chloride solution taken in water, or glucose solution taken in a water. So basically solution contains two parts, which is nothing but the solute and solvent. So we have to remember what is meant by the term solution. So in order to express the concentration of this particular solution, we are going to use the term concentration. Being a chemistry student, this term is very important us to know. So basically what is the concentration? It is the quantity of the solute dissolved in given amount of solution. I will repeat, it is the amount or quantity of the solute which is dissolved in given amount of solution, solvent. So basically that express the quantity solution. So based upon that, we can say the concentration of solute can be expressed. So based upon the quantity of the solute and quantity of the solvent, in which that ratio or in amount or volume basis that is being used, so that will decide the desired concentration of solution. Then we have also seen the concentration of the solution can be expressed by physical units and by chemical units. The physical unit may be based upon the quantity of the solute and quantity of the solvent. So that may be on weight by volume. We used to say that W by V. Then it may be by weight. So the quantity of the solute is taken in the weight and quantity of the solvent also in the weight. Then volume by volume. So both are taken in the volume. And in the chemical unit, the volume basis, we can see how we can express the term molarity. So molarity is nothing but the moles of the solute dissolved per liter of the solvent. So molecular weight, basically molarity we have to remember the molecular weight dissolved per liter. So this is short identification we have to come to know. We must know the molecular weight of the solute. Based upon that we can calculate. Then we can also see in the term formality. So formality is directly related with the formula weight of the solute dissolved per liter or dm cube of the solution. So these two terms we have seen, and if we try to find out what is the difference between the molarity and formality, we can express the concentration of individual ions with the help of molarity, and for the formality we can express for whole or total molecule without its ionization part. So this is a difference in between the molarity and formality. Today we are going to see the term normality and molality. So let us see what do you mean by normality. So it is again a unit by which we can express the concentration of solution. Many times we have seen the capital N, which is nothing but the normality. So basically remember, it is defined as the number of equivalent of solute present in 1 liter or 1 dm cube of the solution. So normality is nothing but the number of equivalent of solute dissolved per liter of the solution. So in order to express the normality, we must taken into account the normal equivalent weight. So equivalent weight must be known to you. So normality is nothing but the number of gram equivalent of the solute divided by volume of the solution in dm cube. So we must know the gram equivalent. So how to know the number of equivalent?
it is nothing but amount of the solute in grams, that is W, divided by E, that is equivalent weight of the solute. So we must know equivalent weight in order to know the number of equivalent. So it is just like a amount of solute means W divided by E. So this particular quantity what is there in the numerator will become W divided by E into 1 by V. So this is the expression for the normality. Remember, just like a molarity. Here in molarity we have capital M. For formality we have capital F. For normality we have capital E. So this is the equation for expressing or calculating normality of the given solution. W, that is amount of solute, divided by equivalent weight into 1 by V. So equivalent weight, this quantity, this term you might have learned in your earlier classes. So basically it is defined as the weight of the substance which provides Avogadro's number of reacting units. So we can calculate this particular quantity with respect to the Avogadro's number which are reacting units. We will see how to calculate the equivalent weight. Basically the reacting units are defined that will vary or change depending upon the type of the reaction involved. As we know that in the practical process we have carried out different reactions. So basically we have seen that there is a neutralization reaction, that is acid base reaction, or there may be a redox reaction that we used to call as oxidation or reduction reaction, where gain or loss of electron will take place. Then the complexation reaction will take place, formation of complex will take place, or redox reaction. So based upon that we can calculate the equivalent weight. So let us see for first acid base reaction. Acid base reaction means कौन सा reaction? Suppose acid HCl है, उसके versus base NaOH. So HCl versus NaOH, or any acid, strong acid or weak acid, or any acid or base reaction. So this is a neutralization reaction. So equivalent weight of an acid or base is defined as weight of acid or base which can provide or react with the Avogadro's number of hydrogen ions. So it is related with the hydrogen ions. So remember the term basicity, how to calculate, because in order to calculate the equivalent weight for acid we must know the term basicity. वैसे वर्षा है, एसिड के लिए कौन सी टर्म चाहिए अपने को? बेसिसिटी ऑफ एसिड. सो हाउ टू कैलकुलेट द बेसिसिटी? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस दैट मॉलिक्यूल्स गिव्स आफ्टर इट्स डिसोसिएशन. ओके, सो दैट विल गिव, अगर कोई एसिड है वो डिसोसिएट होने जाने के बाद कितने H प्लस आयन देता है? सपोज HCl है, वो HCl डिसोसिएट होगा एज ए H प्लस Cl प्लस. सो HCl एक ही H प्लस देगा. सो उसकी जो बेसिसिटी है वो 1 हो जाएगी. ओके, देन एसिडिटी, इट इज़ रिलेटेड विद द बेस. सो बेस जो है वो कितने OH माइनस आयन देगा उसके डिपेंड है उसकी एसिडिटी. सपोज NaOH है, NaOH विल डिसोसिएट एज Na प्लस OH माइनस. सो उसकी जो एसिडिटी है वो 1 है, क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाने के बाद एक ही OH माइनस देता है. हम लोग देखेंगे अभी आगे के स्लाइड्स में. So remember how to calculate the equivalent weight for acid. Molar mass divided by basicity of acid, and equivalent weight of a base can be calculated as molar mass divided by acidity of a base. यहाँ पे base चाहिए, acidity of a base. So now अभी देखो, concentrate करो. अभी देखो हम लोग कैसे calculate करते हैं basicity of acid. Suppose acid है, what are the example you know? तो एसिड्स कैन बी आइदर मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक मतलब क्या कि एक H प्लस देगा. डायबेसिक मतलब क्या 2 H प्लस आयन देगा डिसोसिएट हो जाने के बाद. ट्राइबेसिक मतलब क्या 3 H प्लस आयन देगा डिसोसिएट हो जाने के बाद. सो लेट अस सी मोनो. अगर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोबेसिक एसिड, तो आप लोग क्या बोलेंगे? HCl है, HNO3 है, एसिटिक एसिड है. सो दीज आर व्हाट? मोनोबेसिक एसिड. क्यों? सपोज आप HCl लेंगे तो HCl क्या डिसोसिएट होगा? H प्लस Cl माइनस, एक ही H प्लस आएगा आयन देगा, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1. ओके, क्योंकि वो एक ही H प्लस आयन देता है. अगर हम लोग डाइबेसिक एसिड देखेंगे H2SO4 H2CO3, तो एसिटिक एसिड इज नॉट रिलेवेंट एग्जाम्पल. H2SO4 कितना देगा? 2H प्लस SO4 2 माइनस.
ट्राई बेसिक एसिड H3PO4 कितना देगा 3H प्लस. सो यहाँ पे बेसिसिटी 2 हो जाएंगी, यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो जाएंगी 3. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट. सो अगर HCl के लिए मैं पूछूंगा, यहाँ पे डालूंगा 36.5 डिवाइड बाय बेसिसिटी कितनी हो जाएंगी 1. यहाँ पे अगर H2SO4 के लिए मैं मोलर मास डालूंगा 98, तो 98 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 49. सो दैट विल बी इक्विवेलेंट वेट. मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट आर डिफरेंट. सो इक्विवेलेंट वेट के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एसिड और बेस. नाउ हम लोग बेस के लिए देखेंगे. इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे देखते हैं कि उसका मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी. अच्छा, एसिडिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ OH माइनस ON दैट गिव्स. अभी बेस के लिए सपोज एग्जांपल क्या है, NaOH KOH. NaOH और KOH एसिटिक एसिड नहीं आएगा यहाँ पे. NaOH KOH कितना देगा K प्लस OH माइनस, एक ही देगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट आएगा Ca प्लस 2OH माइनस, 2OH माइनस देगा. सो एसिडिटी कितनी हो जाएंगी 2. AlOH थ्राइस के लिए एसिडिटी कितनी हो जाएंगे 3 बिकॉज इट गिव्स 3OH माइनस. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट the equivalent weight. Remember, in order to calculate the term E, we have to take the term molar mass divided by acidity और basicity. मैं आपको acidity और basicity ये जो concept है वो बता रहा था, that is related with the number of H plus ion or replaceable H plus ion given in a solution. redox reaction है. redox reaction मतलब क्या है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है. ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो जहाँ पे ये रिएक्शन होती है वहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ सिंगल मॉलिक्यूल और आयन कैन लूज और गेन. फॉर्मूला देखो. So equivalent weight of oxidizing or reducing agent is equal to molar mass divided by number of electron. So यहाँ पे एसिडिटी और बेसिसिटी टर्म अप्लाई नहीं होंगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में. सो वी हैव टू कंसीडर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और डोनेटेड वी हैव टू टेकन इनटू अकाउंट. Now we will see the example. The example will clear you to how to calculate the normality in an acid base reaction and in redox reaction. Oxalic acid, 3.6 gram of oxalic acid are dissolved in a volume which is made up to 150 ml. Calculate normality of the solution in acid base titration and normality of redox titration. Given क्या दिया है, H is equal to 1, C is equal to 12, O is equal to 16. Already you know. In last part we have seen how to calculate the normal molarity. So मेरे को क्या दिया है कि 3.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, उसका फॉर्मूला है H2C2O4 twice H2O, डिजल्व के 150 ml में एसिड लिया है, उसमें 150 ml पानी डाला है. 3.6 ग्राम एसिड है और उसमें 150 ml लेटेस्ट से सपोज पानी से उसका वॉल्यूम एडजस्ट किया है. तो वो सॉल्यूशन का मेरे को क्या निकलना है, एसिडिटी निकलना है. दो तरीके से निकलना है, एक एसिड बेस टाइट्रेशन से और दूसरा रेडॉक्स टाइट्रेशन से. सो कैसे निकालेंगे, मेरे को दिया गया है, पहले वो सब पहले लिख लो. हमारा क्या तय हुआ है कि जब भी कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट राइट डाउन द डाटा. क्या दिया है, W दिया है 3.6 ग्राम. G किसका यूनिट है, W का, लिख डालो चलो 3.6 ग्राम. वॉल्यूम कितना दिया है 150 ml. बट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टर्म नॉर्मेलिटी वी मस्ट नो द वॉल्यूम इन लीटर्स. सो कन्वर्ट ml इंटू लीटर. कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितने भी ml दिए उसको डिवाइड बाय 1000 करो. सो कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 1000, यहाँ पे 100 है, करेक्ट करो. सो 0.15 लीटर. ओके. सो मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कैलकुलेट करो. H2C2O4 आपको दिया है ऊपर, H इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 12. सो इफ यू डू द कैलकुलेशन वी विल गेट द वैल्यू अप टू 126. सो 126 इज द मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. ओके. एंड ऑक्जेलिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड है. देयरफॉर इन एसिड बेस टाइट्रेशन, डाइबेसिक मतलब क्या है, इसमें H2 कितने है, 2 है. सो डिसोसिएट हो जाने के बाद कितने H2 मिलेंगे, 2. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, ओके, 126 आए डिवाइड बाय 2. डिवाइड बाय 2 क्यों करने का, क्योंकि उसकी बेसिसिटी कितने आ गए 2. ओके.
So 126 divided by 63. So E term will become 63. नॉर्मेलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया आपको कि W इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय 1 बाय वी. W क्या है 3.6, E क्या है 63 इंटू 1 बाय वी. V कितना है 0.15. चलो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो. क्वांटिटी विल बिकम 0.3810 n. n मीन्स व्हाट नॉर्मेलिटी. सो नॉर्मेलिटी कितने आ गई आपकी वो सॉल्यूशन की ऑक्जेलिक एसिड की 0.38. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी. सो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे. मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, देखने का नंबर ऑफ H प्लस कितने हैं OH माइनस कितने हैं उसके हिसाब से इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद फॉर्मूला यूज़ करो. नाउ रेडॉक्स टाइट्रेशन करने का है. सो H2C2O4 कैसे लिखेंगे रिएक्शन. इट गिव्स 2CO2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन. सो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं. सो इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो अगेन हाउ टू राइट डाउन फॉर्मूला मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. ओके, how many electron lost 2. So 126 divided by 2 becomes 63. Again the same quantity, again the same formula, again the same things we have to put. So both the way you get the normality is equal to 0.3810 नॉर्मल. सो इसके मुताबिक आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. बुक्स में प्रॉब्लम दे रहते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द वेट ऑफ द सॉल्यूशन substance that we require 250 ml of 0.1 नॉर्मल. यहाँ पे आपको W निकालना है कि अगर मेरे को 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए W कितना क्वांटिटी लेंगे, HCl का, H2SO4 का, HNO3 का, NaOH का, KOH का. मेरे को 250 ml सॉल्यूशन बनाना है. कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl कितना है 36.5, उसकी बेसिसिटी कितनी है 1, 36.5. So normality is equal to W divided by E into 1 by V. Therefore W is equal to N into E into V. यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो 0. N is equal to 0.1, E is equal to 36.5, V कितना है 0.25. Therefore 0.9125 ग्राम अगर आप इससे लेंगे और उसका वॉल्यूम 250 ml एडजस्ट करेंगे तो उसका नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 0.1 नॉर्मल. ओके, HCl हो गया. अभी देखते हैं H2SO4. H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98. ये मोनोबेसिक है डाइबेसिक है, डाइबेसिक है क्योंकि H2 कितना देगा 2. सो 98 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 49. देयरफॉर अगेन द फॉर्मूला W इज इक्वल टू E डिवाइड बाय N इज इक्वल टू E डिवाइड बाय N इज इक्वल टू W divided by E into 1 by V. So in order to determine the W is equal to N into E into V. 0.1, 49, 0.25, 1.225 ग्राम्स. अगर आप H2SO4 लेंगे और उसको वॉल्यूम 250 ml तक एडजस्ट करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नॉर्मल हो जाएगा. H2SO4 हो जाएगा. अब हम लोग डायरेक्टली NaOH और KOH देखेंगे. NaOH, in order to determine for NaOH you can also calculate, you can try for this too. okay, NaOH molecular weight कितना है, NaOH क्या है एसिड है बेस है, बेस है. सो NaOH कैलकुलेट करो Na23O16 प्लस 1 40. सो molecular weight become 40 divided by 1 is equal to 40. so 0.1 into 40 into 0.25 is equal to 1 gram. सो 1 ग्राम अगर आप NaOH लेंगे और 250 ml को उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे तो दैट सॉल्यूशन बिकम 0.1 नॉर्मल. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी. अब KOH का इक्विवेलेंट वेट निकलना है. ओके, सो कैसे करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट KOH का कितना है 56, उसकी एसिडिटी कितनी है 1. सो इट विल बिकम इक्वल टू 56. सो इफ यू पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन you will get 1.4 gram. So this is how we can calculate the normality of any particular solution, or if we want to calculate how much grams we need to take in order to prepare 0.1 normal solution. Okay, so remember normality is very important term
because in order to prepare any particular solutions, generally we have to consider is normality. Now let us see that another term, molality. So molality is directly related with the number of moles of given substance per kg. Okay, so here not we have to consider the volume of the solution solvent in liters but in kg. Remember, for molarity we have to consider the weight 1 kg, that is equal to 1000 gram. So moles divided by number of grams of solvent. मोल्स कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी. क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. क्वांटिटी मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 by V in kg. Okay, so WA is the solvent, contains WB of the solution having molar mass MB. M मतलब क्या? Molecular weight. Suppose दो component है, A is the solute and B is the solvent, so there will be two values. One will be WA and WB, that is with respect to weight, and another will be MA and MB, that is with respect to mass. So molarity is nothing but WB divided by MB, solvent का weight, solvent का molecular divided by WA divided by 1000. So if you know this particular formula, you can calculate. When you see the example, it will be clear. So in order to see the example, let us see what is the molality of the solution which contain 20 gram of cane sugar dissolved in 125 gram of water. Very interesting solution. What is given in the problem? 20 ग्राम शुगर ली है और डिजल्व किए 125 ग्राम में. आप लोग देखेंगे पानी का वजन भी ग्राम में दिया है. ओके, बिकॉज फॉर वाटर द डेंसिटी इज 1, so whatever the mls, that will be equal to the number of grams. ओके, अगर आपको 125 ml दिया है तो दैट इज इक्वल टू 125 ग्राम्स ओनली. राइट डाउन द वैल्यूज. सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या है? केन शुगर. और सॉल्वेंट क्या है? पानी, वाटर. ओके, सो क्या निकलना है? मोलैलिटी निकलना है आपको. सो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वांटिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स कैसे निकालेंगे? ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. आपको दिया है मॉलिक्यूलर वेट C11H22O11. ओके, केन शुगर, सो इट इज हैविंग इक्वल टू 342 मॉलिक्यूलर वेट. यू कैन कैलकुलेट 12 into 12 plus 12 into 11. Sorry. So how to calculate 20 divided by 342 into 0.125? This is the mass of. So moles कैसे कैलकुलेट किया? 20 divided by 342, क्वांटिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. यहाँ पे हमने लोग देखा ना कैसे निकालते हैं, ये क्वांटिटी डिवाइड बाय. सो दिस इज मोल्स वी कैन कैलकुलेट. यहाँ पे पुट अप क्या है, ये कैलकुलेट किया है, तो इसका यूनिट क्या गया? मोल पर केजी. So go through these two terms, very important, molarity, normality and molality. So remember, molality is the term which is related with the kg of the solvent being taken. So go through this particular two terms, so try to solve some numericals. The numericals will help you to understand the concept very clearly. So thank you very much. See you in the next session with some another concentration terms.